with us, former Test cricketer, chief selector, national coach, Janab Mohsin Khan Sahab. Mohsin, good morning and welcome to the show. Good to have you here. You look rested, you look happy. लगता है कि कल जो है वो आपकी शाम जो है वो भाभी ने ज़्यादा टेंशन नहीं दी आपको. आज आप यंग लग रहे हैं. मुझे 4 साल पीछे बैकग्राउंड में चले गए आप. अच्छी बात है. सिर्फ 4 साल. वाह. और उनके साथ दोस्तों हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं. One of our finest wicket keepers the game has ever seen and one of the finest analysts that I've ever worked with. It's a great pleasure to have in the studio with us, Janab Rashid, Latif bhai. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जबरदस्त कॉम्बिनेशंस आपके चल रहे हैं. पॉकेट स्क्वेयर्स, टाइज और सूट्स और सॉक के. दोस्तों आप लोग जुराबे नहीं देख सकते राशिद भाई की. लेकिन जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नहीं किया था, वो इनसे कर लीजिए. देखिए क्या माशाल्लाह भाई, मुझे तैयार करने में मदद करते हैं मेरे अख्तर साहब. बोलते हैं ये पहन के आना है, वो खुद भी वैसे ही पहन के आ जाते हैं. आप भाभी को मेरे अख्तर पे नेक घर से आप तैयार होकर नेक अख्तर या आप किसी हाँ, वहाँ से परमिशन के बगैर तो जा नहीं सकते. हेडक्वार्टर से जरूरी है भाई परमिशन. उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता. But looking like sharp like always. Good to have you here. Thank you very much for being here with us. The all-rounder par excellence, the man who could change the nature of any match all by himself with the bat or the ball, all the way from South Africa. A very special guest, real privilege to have him with us in the studio every day, Mr. Lance Flusner. Zulu man, good morning. Hello. You look good, buddy. Yes. That's it. Good, man. All good. Ready to go. All set. Yeah, I believe so. I believe you're in good neighborhood. No. This is not a good neighborhood. That's debatable. No, it's not totally debatable. I think it's just not a good neighborhood. It's anyway. Well, whatever you may say, this neighborhood is controversially yours now for the rest of the World Cup. You have to deal with choice. And with us, the ever smiling, the superstar, the man with a plan, always predicting, always speaking from the heart at 100 miles per hour, and the legend of cricket, one of the fastest bowlers the game has ever witnessed, Mr. Shoaib Akhtar. Good morning, Shoaib. Welcome. Good morning, sir. Good morning. Good to have you here. 500,000 subscribers on YouTube for Shoaib Akhtar this morning, ladies and gentlemen. अगर इसी रेट पे इन्होंने विकेटें ली होती तो कितनी विकेटें होती कसम से यार टेस्ट क्रिकेट के अंदर. जिस रेट से इनके YouTube के सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं राशिद भाई, मैं कुछ नहीं बोलूंगा. ठीक है ना बोले. But that's well done, Shoaib. That's really well done. That's very impressive. 500,000 subscribers in less than 10 days. In less than 10 days. 15 days. इस बात का छोटा सा मैं जवाब दे दूं. आपने जो इनका कहा बढ़ जाएंगे, विकेटें इतनी होती, विकेट्स मिला के, और ये भी देखें कि कितने बैट्समैनों को इसने दुनिया में डराया है, वो सब मिला के इससे ज्यादा हो जाएंगे. Yeah, that's true though. That is true. You scared the living daylights out of many a batsman around the world. You're the only one who understands me here. You're like South Africa. You're like my son, man. I'm just really hurt. Maybe we should make you sit here tomorrow onwards. I can sit anywhere. I know that's true. How about you come and sit Yeah, here? he wants and to, I can take a couple of days off. Agar he wants to sit there, I would be more than happy if I could take a couple of days off and we can have you here, Shoaib. That would be so nice, by the way. All right, gentlemen, let's kick off with the phase of the World Cup, and let's first talk about our match yesterday. Bristol में कल बारिश की वजह से Pakistan and Sri Lanka both ended up with 1 point each. Flusner, let me start off with you. How much do you think rain will hurt in these 1 points that both teams have lost, Sri Lanka also and Pakistan also? Because you never know who would have won the match, right? But how would this hurt now in the days ahead? Look, I think that probably doesn't hurt them right now, but as you go deeper into the competition, that will always play in the back of your mind. Where would we be if we'd had just one more point? So, Pakistan would have walked away. I don't think it's going to hurt Sri Lanka too much, to be honest. I don't think they're going to be competing, in my opinion, up there. So it's not going to really hurt them. But a team like Pakistan, that is going to be competing for a top 4 place, it is going to be in the back of their minds. Sometimes that 1 point can also act as a win as well. Sometimes you just need that 1 point to separate you. But I think it's going to be closer than that. It's going to come down to run rates, as we've spoken about before. So to answer your question, I think it will hurt them at some stage. They'll be ruining that 1 point, as well as if they'd had a good game, a better run rate. Yes, that would have been very, very critical. Mohsin bhai, बारिश की वजह से मैच हो गया. अब अगली फोरकास्ट जो है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की, जो कल शोएब ने भी बताया, ब्रेकिंग न्यूज़ ही थी, वो फोरकास्ट जो है वो अभी से ये कह रही है कि तब भी बारिश एक्सपेक्टेड है. वो मैच भी वॉश आउट हो सकता है. तो क्या आपको ये लगता है कि ये फेयर होगा कि किसी भी टीम के लिए
कि वो बारिश के उसको 2 मैचेस में बारिश हो गई, उसको 1-1 पॉइंट मिला और एंड में पता चला कि जनाब वो क्वालिफाई नहीं करी सेमीफाइनल के लिए। सही कह रहे हैं आप। और फिर लेकिन एक बात है, लाइक आई सेड यस्टरडे, फखर, यू कैन नॉट फाइट द नेचर, दिस इज ऑन लक। गुड प्ले इज इन योर हैंड्स व्हेन यू वर्क हार्ड, मेहनत से आप खेलते हैं। एंड आई टोटली एग्री विद लांस व्हाट ही सेड अबाउट if it would have been a 20 over curtailed match, I would have said things would have gone 50-50. But playing a full match, Pakistan definitely lost the advantage of losing a point. Because wo in the end can matter a lot. और ऑस्ट्रेलिया की जो मैच की आप बात कर रहे हैं और ऑल टुगेदर आप जो बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं फखर। एक अच्छी टीम को बिकॉज ऑफ बैड वेदर, if we lose points, if we lose or any other good team lose points, any good team, those who are the top contenders, 4 or 5 teams. So I think they will definitely lose a bit in the when it comes after the 5 matches or 6 matches. When it comes to the last 2 or 3 matches, then it can hurt a good team. And I can proudly say that, though we are not playing to our potential in every match, and South Africa is not playing to their potential in every match. But these 2 teams, in case because of bad weather, suffer कर सकती हैं. और let's hope कि मैं honestly speaking, for a Pakistan team, for a good team like South Africa, I hope it does not affect a good team. So हाँ, कोई अपील करके ऊपर अच्छा खेल के क्रिकेट खेल के आता है, like Bangladesh. I've got a lot of respect for Bangladesh. They play very good cricket. बड़ी मेहनत से. They're actually a top-notch team right now. Top notch. We will talk about that. और अब से हाँ, लेकिन मैं कह रहा था कि लेकिन हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि अगर खुदा न खास्ता हमें एक मैच का 1 पॉइंट का लॉस हुआ, अगर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी अगर ये प्रॉब्लम हो गई तो हमें खुदा खास्ता नुकसान पहुंच सकता है। राइट राशिद भाई, क्या पाकिस्तान टीम के ऊपर अब आने वाले मैचेस में प्रेशर, इस चीज का प्रेशर होगा क्या कप्तान के ऊपर, कोच के ऊपर, कि यार हम एक यहाँ पे जो हम ले सकते थे, पोटेंशियली ले सकते थे, क्योंकि हम सब ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमने श्रीलंका को पूरे मैच के अंदर डिफीट कर देनी थी तो 2 पॉइंट उठा लेने थे। तो अगर ऐसा होता तो क्या अब ये आने वाले दिनों में ये 1 पॉइंट जो हमने कल लूज किया है, इसका कितना प्रेशर पड़ेगा टीम के ऊपर? क्योंकि अब इसका मतलब ये कि अब तकरीबन सारी गेम्स जीतनी पड़ेंगी आपको आगे। बहुत फर्क पड़ेगा 1 पॉइंट के आगे जाके मालूम चलेगा सही। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की मैच की जैसे शोएब ने बात की, बारिश है, पाकिस्तान काफ़ी अरसे के बाद बड़ा मैच जीता अगेंस्ट नंबर 1 टीम इंग्लैंड। उसके बाद मैच मिलने चाहिए थे, ये मैच बड़ा लॉस हुआ है पाकिस्तान का, क्योंकि आप मोमेंटम शुरू हुआ तो बारिश हो गई, फिर अगले मैच में बारिश होती है, मोमेंटम रुक जाता है आपका। जिस तरह से एक हाई पीरियड होती है, एक मोटिवेशन टीम के अंदर थी, वो स्टॉप हुई है। क्योंकि 11 मैच हारते हारते जब बारिश होती है ना, तो आपके लिए एक उम्मीद की किरण होती है, अब बारिश हो गई। लेकिन जब जीते इतना बड़ा मैच, वर्ल्ड कप का मैच जीते अगेंस्ट नंबर 1 साइड, उसके बाद आपको मैच लगातार मिलने चाहिए। और मोमेंटम की मुझे इतना कॉन्फिडेंट होगा ऑस्ट्रेलिया को हम हरा देंगे। हम ये श्रीलंका से चले या बारिश बहुत ज़्यादा हुई कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया से हमें मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। और ये बड़ी टीम को हराएंगे तो आप आगे हल्की टीम जो भी आएंगी, जो रैंकिंग में कम है, रैंकिंग में हम भी बहुत ऊपर नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप की रैंकिंग में हम टॉप 4 में आ सकते हैं। तो यही उम्मीद होनी चाहिए, हमें भी होनी चाहिए। लेकिन मैच जरूरी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि स्टार्ट हुआ है मोमेंटम, वो कैरी ऑन होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत फखर राशिद की बात में ऐड कर दूं एक लाइन, बहुत अच्छी बात की है। इंग्लैंड हराया नंबर 1 टीम को, मोरल बूस्टर। ऑस्ट्रेलिया को भी अगर हराएंगे तो कमाल का मोरल बूस्टर है जी, एब्सोल्युटली। शोएब, अभी इस वक्त जहां पर आप देख रहे हैं माहौल जिस तरह बन गया पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मैं कल के मैच के उससे वो कर रहा हूँ, और राशिद भाई भी कह रहे थे कि मैच खेलते रहते हैं, मोमेंटम हमारा जो है वो रहता, बनता रहता। कल भी अगर हो जाता मैच तो ज़्यादा होता। अब हमारी टीम के ऊपर आपकी नज़र में प्रेशर की नौयत कितनी बढ़ चुकी है? Not much, but let me say this, that I think this match, which was drained off against Sri Lanka, it's not going to hurt us more, but the match against Australia, if that gets drained off, that is going to create a lot more strain and pressure on other teams, and including Pakistan. Because Pakistan is actually on their way to win most of the critical games. And I could see Australia getting beaten up there. I did see that, that was happening. West Indies could have beaten Australia like as anything, but they didn't. Had they beaten Australia, that scenario would have been a totally different of the World Cup right now, because Pakistan would have been just gone out there with lots of belief in terms of, we've beaten England and we've beaten another second best or
top-notch team in the world. By beating them, Pakistan would have been on the confidence would have been skyrocketing. But let me tell you, today's game is going to be a hat trick for England. Bangladesh, for last 2 encounters in the World Cup, Bangladesh has won twice against England, and this time around the task seems like an impossible task for them to beat England. But could they do that? Could they do this miracle once again by beating England somehow, one way or another? That would have been just like going to be another story. It is going to be another story. Well, दोस्तों कल के मैच के बारे में हमने बात की ब्रिस्टल में पाकिस्तान बामुकाबला श्रीलंका और एक पॉइंट के साथ अब लेकर चलते हैं सिलसिला आज की तरफ. आज वर्ल्ड कप में two games that are going to be played today. It's a double header today. First game is Cardiff, where England is taking on Bangladesh. The other game is Afghanistan versus New Zealand. Now, New Zealand is coming off 2 wins back to back. The last game against New Zealand was a close call. Against Bangladesh was a close call for New Zealand, but they did pull through and they won that game. So they've got 4 points with them. Afghanistan is the team that we've all been tipping off as being one of the teams that potentially can cause a major upset. Would that be the game today? We'll find out as we go along, as the day proceeds. Let's take a look at the England versus Bangladesh scenario. And interestingly, the total ODIs played between England and Bangladesh are 20, out of which England has won 16 and Bangladesh has won 4. But in the last 5 ODIs, England has won 3 and Bangladesh has won 2 ODIs. And in the World Cup, so 2011 and 2015, both these teams have played in World Cup matches thrice against each other, and Bangladesh has won twice and England has only won once. That is, Lance, a very interesting stat. Yeah, I don't pay too much attention to the 20 games, but certainly for the last 5 games. And we've spoken before when Bangladesh have played, and for me, this is their best squad that they've sent to the World Cup before. So that's quite a warning, really, for England. Let's not forget, as you mentioned earlier, England's exit out of the 2015 World Cup came courtesy of Bangladesh. Yes. But to England's credit, they drew a line in the sand. They got rid of their coach. They got Trevor Bayliss in. They drew a line in the sand, and they decided to become a force in one-day cricket. And 4 years later, arguably the best team in one-day cricket in the world. So it's a full circle. True. Can they come back and set things right, or is Bangladesh going to have the last say in that full circle? So it's very, very intriguing. However, I think England may prove a little strong, but is this the banana skin that England could stand on to spoil their road into the top 4? Right on. Mostly England coming off a defeat from Pakistan, a match clearly that at one point looked that they had completely made it one-sided towards as we were progressing along, and then Pakistan came back out of nowhere and took that game away from England. That must be hurting them, because we saw the body language of the English players and their coaching staff during that game when they were showing shots of the dressing room. You could see Ian Morgan and the coaching staff, everybody very dejected, very disappointed. Is that going to be weighing on their mind today against Bangladesh, and knowing fully well that in the 3 encounters in World Cup matches, they've lost to them twice and only won once? Fakhar, the body language you said, we heard Ian Morgan after the match. He couldn't speak properly. Yeah. They were shocked, and always when there is a stronger team playing against a slightly weaker team, the pressure is on the stronger team, because everybody is expecting them कि ये जीतेंगे, पता लगाओ मैच हार गए. पाकिस्तान का जिस तरह रिकॉर्ड चल रहा था, 8-10-12 मैच 11 मैचेस लगातार हार रहे थे, अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इतना ज़बरदस्त क्रिकेट खेलेगा. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े आई कैन प्राउडली से दैट पाकिस्तान बीट इंग्लैंड बाय प्लेइंग गुड क्रिकेट. सो ये उन पे प्रेशर डेफिनेटली होगा. और यहाँ देखिए अब बारिश का कुछ सिलसिला शुरू हुआ है, तो इंग्लैंड भी कोशिश करेगी कि यहाँ हम फेवरेट्स हैं अगेंस्ट बांग्लादेश, जो कि मैं लांस ने भी ये बात कही कि बांग्लादेश टफ कोई लाइट टीम नहीं है जिसको आप आराम से निकाल के ले जाएं. उनका वो आउटस्टैंडिंग कोई फास्ट बॉलर्स नहीं है, लेकिन मीडियम पेसर्स हैं, स्पिनर्स पे डिपेंड करते हैं. बट pressure is on England because they have to win this game, otherwise they've already lost to Pakistan, or
कि अगर मौसम ने गड़बड़ की तो वो नहीं चाहेंगे कि खुदा न खास्ता इसमें हमें को तो हमें हमारे हाथ से निकल जाए। लेकिन ऑन द पेपर अगर आप देखें फ़खर की इंग्लिश टीम इज़ मच बेटर देन बांग्लादेश, बट व्हेन द प्ले स्टार्ट्स it may be a different story. When the play starts, it may be a different story. You've heard it from the man himself. Rashid bhai, स्क्वाड पे नजर डालते हैं सबसे पहले। जी, जी। ये इंग्लैंड का स्क्वाड है, इसके बारे में व्हाई डोंट यू टेक अस थ्रू द स्क्वाड राइट नाउ? देखिए, अगर 2015 के वर्ल्ड कप की बात करते थे, इयन मोगन मौजूद थे बांग्लादेश के खिलाफ, मोइन अली मौजूद थे, बटलर मौजूद थे, इसके अलावा बहुत कम प्लेयर नजर आएंगे, मार्क वॉक्स मौजूद थे, इसके अलावा कोई भी प्लेयर नहीं था। जो रूट थे कि बाकी जितने भी प्लेयर 2015 में खेले टेस्ट प्लेयर थे, एंडरसन बॉलिंग कर रहा था और ब्रॉड बॉलिंग कर रहा था वहाँ पे, और क्रिस जॉर्डन थे। बॉलिंग भी वीक थी, बैटिंग भी वीक थी। यहाँ पे अगर कार्डिफ में मैच हो रहा है, एक चेंज होनी चाहिए, और इनके पास अभी है एक चेंज करने के लिए। आदिल रशीद की जगह प्लंकेट आता है जो मिडिल ओवर में आउट कर सकता है, क्योंकि ग्रीन है, मॉइस्चर होगा और बांग्लादेश को आउट करने में आसानी होगी, क्योंकि मिडिल ओवर में प्लंकेट आउट करने वाला बॉलर है। तो एक चेंज बनती है यहाँ पे, इसलिए कि कंडीशन पिच की चेंज है, वेदर चेंज है, क्योंकि मस्ट विन है इंग्लैंड के लिए। ये नहीं है कि इंग्लैंड नंबर 1 है तो थ्रू हो जाएगी, ये मस्ट विन गेम है फॉर इंग्लैंड। It's a must-win game, and Rashid Latif suggests that Adil Rashid should be replaced by Plunkett because Plunkett has a habit of taking wickets in the middle of the game. And we have our discussion going on: England versus Bangladesh, a crucial encounter, and then the second game of the day today, Afghanistan versus New Zealand. But before that, we're going to throw out a question. आप लोगों के लिए Easy Deals मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर अपना पहला सवाल आज का हिमानी की तरफ से, हिमानी की गिफ्ट बास्केट के लिए आप लोगों से सवाल आ रहा है पाकिस्तान, और वो है कि what are the consecutive number of matches Jahangir Khan won in his career? What was the largest consecutive number of matches that Jahangir Khan won in his career? Jahangir Khan, of course, हमारे लेजेंड स्क्वॉश के, उन्होंने कितने consecutive मैचेस सबसे ज्यादा जो थे वो जीते थे? हिमानी की तरफ से आप लोगों से सवाल है। इजी डील्स की मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर सवाल हमने आपकी जो है वो डाल दिया है, सवाल का जवाब दीजिए और वापस आके हम विनर का नाम बताएंगे। हमारी गुफ्तगू यहाँ जारी रहेगी। आप देख रहे हैं गेम ऑन है, मैं हूँ फखर आलम, और मिलते हैं आप लोगों से एक ब्रेक के बाद।